started projectile motion, right? Now, what are these projectiles called? These projectiles are called obliquely projected bodies. Okay, these are oblique projectiles. What do you mean by oblique? Tell me. They are thrown with some angle with x-axis. Horizontal. Yeah, with horizontal. They are shown. They are projected with some angle with horizontal, and that angle is neither 0 degrees nor uh, it is 90 degrees. It may be some angle between 0 and 90. So that is general angle of a projectile. So here this is the direction in which you are projecting the body. Okay. Now generally, how is the angle measured? It is generally measured from horizontal direction, not with vertical direction. So this is your angle theta. And what was the magnitude of velocity of projection? It was u. Now u has two components. Tell me, this is horizontal component. What is horizontal component? U cos theta. It is u cos theta. And what is the vertical component? U sin theta. The vertical component is u sin theta. Let me take one more color. So this is u sin theta. Okay. And what will be the trajectory? Trajectory will be something like this. Okay. This is the trajectory. What do you mean by trajectory? So the path followed by the Direct trajectory is the path. So it will move along this line. So this is the path. So it will move like this. It will go to the highest point and it will come back and it will fall. Okay, clear? Now, what was this? What was this? What was this? maximum height. This is maximum height h, capital H. Height. So maximum height is the farthest distance from the or farthest vertical distance from the ground to which the projectile reaches. That is called maximum height. Okay. What about this? One second. What was this? Range. Range. This was called range. So what is range? Range is the distance between point of projection and point at which the projectile will strike the ground for the first time. Yeah? Yes. That is range. Now, we already saw certain parameters. Time of ascent was what? U sin theta by g. U sin theta by g. Time of descent was also U sin theta by g. What was time of flight? Twice U sin theta by g. 2u sin theta by g. And what was maximum height? U square sin square theta by 2g. Sin square theta by 2g. And what was range? U square sin 2 theta by g. Clear? Okay. Now these first 4 formulas you got from the last chapter only. In the last chapter, time of ascent was u by g, time of descent was u by g, time of flight was what? 2u by g, and maximum height was what? U square by 2g. Now here in this case, you will not use u, you will use u sin theta. Why? You will use u sin theta.
instead of. Tell me why. Instead of u, you use u sin theta here for time of ascent, time of descent, and maximum height. Why? Why? Because in vertical direction, the component is only u sin theta. Clear? Okay. Yes, sir. And what about range? How did you get the formula for range? Yes, sir. How did you get the formula for range? Give me a second. Yeah, how did you get the formula for range? Range is what? Horizontal speed into time of flight. Do you agree? Time of flight. How did you get this formula? From this. S equals to ut plus half a t square. Now tell me, instead of S, what did I write? R. Instead of U, what did I write? Ux. Instead of T, what did I write? Tf. And what is A? A is 0, right? Yes, sir. Do you agree? Yes, sir. Why? Correct? Horizontal component of G is 0 because G is in which direction? Vertical. Vertical direction. Clear? Yes, sir. So what is range? What is Ux? Ux, what is Ux? Tell me. This is Ux, right? Correct? And this is Yes, sir. Uy. Tell me what is Ux? U Sine U cos cos theta. theta. cos theta. And what is time of flight? U sine theta by g. 2u sin theta by. So what is range? U square 2 sin theta cos theta by. Clear? So what is range equal to? U Yes. square sin 2 theta by g. Agreed? Because 2 sin theta cos theta is what? Sin 2 theta. Agreed? Yes, sir. Okay. So first point. Range for complementary angles is equal. Range for complementary angles is equal. What do you mean by complementary angles? Whose sum is 90? Yes, so sum is 90. That means what? See, range is equal for, tell me, theta and, tell me, theta and what is complementary angle? 90 degree. No, theta का complementary क्या है? 90 minus theta. 90 minus theta. Clear? Are you getting my point? Yes, sir. Reason. Check. R1 equals to. R1 क्या है? U square sin 2 theta by G. Agreed? R2 क्या है? बोलो. Tell me. U square sin. Tell me. 90 minus. 2 times 90 minus theta. Correct? Yes, sir. By G. Okay. Now tell me what is R2?
U square Sine 2 theta Cos by theta. g. 180 minus 2 theta, right? Agreed? Yes, sir. But what is 180 minus theta? Tell me. Sir, sine theta. Sine of 180 minus theta is sine Sine theta. So sine of 180 minus 2 theta is sine 2 theta, correct? Why? Because 180 minus theta is in second quadrant. In second quadrant, all silver teacups. Sign is positive. Clear? Yes, sir. So what is the conclusion? Yes. What is the conclusion? R1 equals to R2. Correct? Hence, ranges for complementary angles are equal. Are you getting? Yes, sir. That means R for a given U is equal if angles are what? Example, give me example. 30 degrees and 60 degrees. Right? One more example, 15 degrees and 75. 75 degrees. One more example, 45 and 45. 45 and 45. Anyway, 45 is same, right? So, any other example? 18 and 72. 18 and 72 degrees. 18 degrees and 72 degrees. Are you getting? Clear? Yes, sir. So, something like this, the situation will look. See. For small angle, the range will be something like this. Okay? For big angle, situation will be something like this. Clear? This is for theta. This is for 90 minus theta. Both will have same range. Clear? Okay? Yes, sir. Okay, this is the first point. Second point. Range is maximum. Range is for a given initial speed or initial velocity will take. Initial speed will take. For a given initial speed, range is maximum at which angle? Anyone can guess? 90 degree. No, at 90 degrees range will be 0. At 0. At 0 degrees also range is 0. At an angle of 45 degree. 45 degrees. How do you know 45 degrees? See, range का formula क्या है बोलो? R equals to U square. Sine 2 theta. Okay. Maximum value of sine is what? Tell me. Sine is 90. hmm, 1. is J. 1 plus 1. Clear? When it will be plus 1? Sine 2 theta is plus 1 if 2 theta is how much? Sine of what is 1?
Sine of what angle is 1? 90. 90 degrees. Therefore, theta is 45. theta is equal to 45 degrees. 45. For 45 degrees, range is maximum. Clear? Are you getting my point? Yes, sir. Okay. Okay. It is something like this. Okay. So this is 45 degrees. Okay. Let me just change the color to yellow. Okay. Yeah, this yellow. Okay, this is 45 degrees. Okay, let me just put it here. Okay. Now, if the angle is some other angle, range will be lesser. Okay. So, for example, these two angles are what? Say 30 degrees and 60 degrees. Clear? This is 45 degrees. Clear? And I'll take one more. I'll take one more. After 30, I think I'll take a smaller angle, say 15 degrees. Are you getting what I'm trying to say? Yes, sir. So this is the Yes, sir. situation. For all complementary angles, the ranges are equal and the maximum range is for 45 degrees. Clear? Just let me. Okay. So this is 45 degrees. This is 60 degrees. For 60 and 30 range is equal. For 15 and 75 range is equal. Can you see that? Okay. Yes, sir. Okay. Next, these two things you have to remember. Now, find the angle of projection. Find the angle of projection for which height is maximum, or the angle of projection for which height is maximum. You tell me. So 90 degree. Yeah, the angle of projection for which height is maximum is 90 degrees. Clear? Why? Formula is what? H equals to u square sine square theta by g. Obviously, for theta equal to 90, h will be maximum. Clear? 2G. By 2g, yeah, by 2g, right? Okay. Next, one more statement I'm writing here, which we just wrote. The angle of projection for which range is maximum. Theta equals to or is 45 degrees. Clear? What is the formula for range? U square sine 2 theta by g. Okay, fine. Next, the angle for which range is equal to maximum height. Angle for which range and maximum height are equal. So for that, what we'll do? We'll just substitute. H equals to, tell me, H equals to R implies what? U square sine square theta by Sine 2g 2G. equals to U square Sine 2 theta by g. g. So we'll just simplify this. U square sine square theta by 2g
equals to, tell me, u square 2 sin theta, 2 Cos sin theta. cos theta by g. G. So most of the terms will cancel. U square will cancel. G will cancel. 1 sin theta will cancel. Actually, it will not cancel. I'll tell you. Okay. We can take sin square theta by 2. Or you can send that to that side, right? Are you getting my point? Yes, sir. 4 sin theta cos theta. Clear? So this will become, tell me, sin square theta minus 4 sin theta cos theta equals to 0. Clear? So Yes. if you take sin theta common, what will remain? Sin theta minus 4 cos theta. 4 cos. equals to 0. So there are two answers here. One is either sin theta equal to 0 or sin theta minus 4 cos theta equals to 0. Do you agree? Yes. So when sin theta is equal to 0, then theta is also equal to 0. Correct? When this is the situation, then what? Then sin theta equals to 4 cos theta. And what is tan theta equal to? 4. 4. So what is theta equal to? Tan inverse of 4. Tan inverse of 4. Tan inverse of 4. So there are two answers. One is theta equals to 0. The other is theta equals to tan inverse of 4. So when theta equal to 0, both will be 0. What? Maximum height as well as range. Okay. Agreed? Yes, sir. For theta equals to, let me write, whenever we write inverse, we have to write capital T. Okay. So theta equals to tan inverse of 4. H equals to R. This will be non-zero. Clear? Okay? Yes. Yes, sir. Okay. Next question. For two complementary angles, maximum heights are they different or same? Same. No, different. Same. Different. R, H1 and H2. You can see in the diagram here, for 75 and 15 degrees, maximum heights are different. For 30 and 60, maximum heights are different. Can you see that? Yes, sir. So for complementary angles, maximum heights are different. Different. But what is same? Range. Range, and have a range of. What will be the range given in this question? Tell me. Will it be given R1 and R2? No, sir. R. Range is R. It will be given R. Why?
because both will have same range. Clear? Okay. So let me rephrase the question. Maximum heights are h1 and h2. Find its range. Find its range. Okay. So the question is, in question h1 and h2 are given. We have to find the range. That means range must be in terms of h1 and h2. Do you agree? Yes, sir. Okay, let me write the formula. Whatever is given, I have to write down. So first, what is h1? U square sine square theta by 2g. Agree? Agree? What will be Yes. h2? U square sine square 90 minus theta by g. U square sine square 90 minus theta by g. But what is sine of 90 minus theta? Cos theta. Cos theta. So what is h2 equal to? So I'm writing it again. h1 equals to u square sine square theta by 2g. And what is h2 equal to? U square cos square Theta by 2. by 2g. Do you agree? Why? Because sine of 90 minus theta is cos theta. Clear? Now these two are given in question. h1 and h2 are given in question. To find, what do you need to find? Range. Range. R. What is R equal to? U square Sine Sine to 2 theta by g. sine to theta by g. Now it is difficult to connect these two. It is difficult to connect these two. Which two? h1 h2 with R. First two parameters with the second parameter. But I have to see that here we have sine theta and here we have cos theta. So it is better to write range as what? Like this. It is better to write range as u square 2 sine theta cos theta by g. Do you agree? Yes, sir. Now see, if I want to relate h1 h2 with R, there is some relation you can see, right? That there we have sine theta. Here also we have sine theta. Here we have cos theta. Here also we have cos theta. But the difference is here we have sine square theta and cos square theta. Here we have only sine theta and cos theta. So what to do? Divide. No. If you divide, it will not cancel. See, in question, theta is not given. So I need to eliminate that theta. So before that, what I need to do? Before dividing, if theta should cancel, if sine square theta and cos square theta should cancel, what should I do first? I should take, instead of R, what? देखो, अगर ये सिर्फ डिवाइड करूंगा तो sin थीटा एक बच जाएगा ना, cos थीटा भी बच जाएगा. तो before dividing, what should I do? For this to cancel, what should I do? I should make it square, right? Yes, sir. So what should I do here? Multiplying by sine theta cos theta. No. Just take the square. We don't have sin theta cos theta. So what is R square? U power 4. 4 sine square theta cos square theta by g square. Now you can divide, right? So h1 h2 by, or R square by, tell me. Equals to what? Tell me. U square for 4 sine square theta. Cos theta. By g square by U U square square sine sine 2 square theta. theta by 2g into u square cos square theta by 2g. So see, most of the things will cancel. See,
Tell me. This G and this G will be G square and this G square will cancel. U power 4, U square and U square will cancel. Clear? Sin square theta will cancel. Cos square theta will cancel. What will remain? This 2 will remain. This 2 will remain. So, what is overall? R square by H1 H2 equals to 16. Correct? 16. So, what is R equal to? Or R square equals to 16 into H1 H2. So, what is R equal to? Root of R equals to 4 into root of H1, H2. H1 H2. That is your answer. Clear? Okay. Okay, fine. Now, here, see, the question is something like this. The kinetic energy. What do you mean by kinetic energy? Tell me, what do you mean by kinetic energy? So the energy due to motion of the body. And what is the expression for that? 1 by 2 mv square. Half mv. Half mv square, okay. Now tell me, in the question he has given that the kinetic energy of the projectile at its maximum height is half of the initial kinetic energy. Are you getting my point? Yes, sir. So this is your initial speed, something like this. So this is the projectile. This is the projectile motion like this. Just change it. Yeah, this is the projectile motion. Now this will be u. Initial velocity will be u. And this angle is theta. The angle of projection is theta. Angle of projection is theta. Now tell me, what is the horizontal component? U cos theta. U cos theta. And what is the vertical component? U sin theta. U sin theta. Now, as the projectile is moving upper in the upward direction, what will happen to u sin theta? It will keep on decreasing and it will become 0 at the topmost point. What about u cos theta? It will increase. U cos theta. It will remain Constant Constant. constant. U cos theta will remain constant. Why? because there is no acceleration. There is no acceleration in horizontal direction. There is acceleration only in vertical direction. direction. Clear? So let me just draw that. There is acceleration only in vertical direction. There is no acceleration in horizontal direction. So u cos theta will remain unchanged. So at the top also horizontal component will be u cos theta only. Correct? And vertical component will be 0. Correct? So during projection, at the point of projection, what is velocity? Tell me. Maximum. Speed is u. Yes, sir.
At the highest point. Speed is 0. no. U cos theta. It's u cos theta, right? Okay. Do you agree? Yes, sir. Now, kinetic energy. Now, let us call it point O. Let us call it point O. Let us call it point A. Okay. Now, what is kinetic energy at point O? Or kinetic energy at point A is half of kinetic energy at point O according to the question, right? Kinetic energy of the projectile at the highest or at its maximum height is half of initial kinetic. Do you agree? Okay. So Yes. what Yes, is kinetic energy at point A? Half m. What is speed there? U. U cos theta. Whole square. Agreed? What about at point A? Half m u square. Clear? Yes, sir. But it is half of this. So into half you will get, right? Clear? Half cancels. Mm cancels. U square cancels. Clear? So what is cos square theta equal to? 1/2. That means what? Cos theta equals to 1/√2. Cos theta equals to 1 by 1/2. root 2. That means theta is what? 45. 45 degree. 45 degrees. Clear? सर सर हाईएस्ट स्पीड का नहीं समझ आया यू cos थीटा कैसे लिखा u cos थीटा कभी बदलेगा नहीं, u sin थीटा कम हो जाएगा ऊपर जाते जाते, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है। u हमेशा ये ux हमेशा कांस्टेंट रहेगा, uy जो है ना कम होएगा, समझ गए? uy की वैल्यू कम होते जाएगी। I'll just redraw that. Okay, I'll draw a new diagram. Okay, suppose this is ground. Suppose this is the velocity with which the body is projected. Okay, let me call it u. This horizontal component will be what? U. Let me take another color. Okay, this is u. This horizontal component will be u cos theta, and vertical component will be u sin theta. Clear? Yes, sir. And this angle will be theta. Clear? This is the projectile. Okay? This is the trajectory. Clear? Now, as the time goes on, this doesn't change. This u cos theta doesn't change. Are you getting my point? Yes, sir. This will be same at every point. At highest point also, and while coming back also.
Clear? Yes, sir. So this will always be u cos theta, u cos theta, u cos theta, u cos theta. Yeah, tell me. सर u cos थीटा तो एक्सेलरेशन थी ना, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन स्पीड तो चेंज होगी ना कौन सा एक्सेलरेशन है? सर u cos थीटा। कैसे u cos theta एक्सेलरेशन कैसे होगा? u cos theta is a horizontal component of u. u के दो कंपोनेंट्स है, one is horizontal component, ux equal to u cos theta. Vertical component uy equals to u sin theta. समझ में आई बात? यस यस सर। सर, यस सर। और g का डायरेक्शन क्या होगा? नीचे, राइट? g का डायरेक्शन नीचे होगा, तो कंपोनेंट्स ऑफ a क्या होगा? कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? बोलो जल्दी। यस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? बोलो। ax इक्वल्स टू 0। वाई? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में इसका कोई कंपोनेंट है ही नहीं, करेक्ट? यस सर। यस हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल कर रहा है ये? 90 डिग्रीज ना, तो cos 90 क्या होगा? 0। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? बोलो। 10 ay equals to, बोलो। -9.8। No, just say minus g, don't say numbers, it is minus g. Clear? ओके सर। ओके, फाइन। अच्छा, तो अपने को ये फॉर्मूला पता है ना, v इक्वल्स टू u प्लस at? यस सर। ओके, v इक्वल्स टू u प्लस at। अब हॉरिजॉन्टल का देखते हैं। हॉरिजॉन्टल में अप्लाई करो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। vx क्या आएगा? बोलो। vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी। डू यू अग्री? यस सर। तो ये हो जाएगा, बोलो। vx equals to ux। vx इक्वल्स टू ux कितना है? u cos थीटा। और ax कितना है? 0। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। प्लस 0 इंटू टी, राइट? तो vx ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट? u cos थीटा। u cos थीटा। इसका मतलब कोई भी टाइम पे देखो, आपका vx जो है ना, हमेशा u cos थीटा ही होगा, ऑलवेज। डू यू एग्री? यस सर। Okay, fine. Now let us look at vertical direction. Vy equals to, बोलो। uy plus ay into t. Agreed? तो बोलो uy क्या है? u cos थीटा। u sin theta u sin थीटा। u sin थीटा। minus ay minus g है, minus gt. Do you agree? यस सर। So what is vy? बोलो जल्दी से। u sin theta, बोलो। माइनस gt। क्लियर? इसका मतलब vy कम होते जाएगा। vy क्या हो जाएगा?
कम होते जाएगा। देखो इधर थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात? इधर और भी कम हो जाएगा, इधर थोड़ा कम हो जाएगा, इधर और भी थोड़ा कम हो जाएगा, इधर और भी कम हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 होगा। समझ में आई बात? इधर थोड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। क्लियर? इधर और Yes, थोड़ा sir. बढ़ेगा, इधर और थोड़ा बढ़ेगा, और इधर जो है ना, जो स्टार्टिंग में था वही ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर? ओके? Yes. तो यू जो है ना हमेशा इसके डायरेक्शन में आएगा, ये जो भी है उसके डायरेक्शन में आएगा यू। डू यू अग्री? तो मैं थोड़ा चेंज करता हूं इसको, ये ऐसे होगा, यू इधर ऐसे होगा, ठीक है? यू इधर ऐसे होगा, तो ये भी मैं थोड़ा चेंज करता हूं जस्ट फॉर मैचिंग दिस। समझ में आई बात? इधर यू ऐसे होगा, तो ये थोड़ा चेंज करते हैं। तो देखो ये दो वेक्टर्स ऐड करने से यू आएगा ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। समझ में आई बात? Yes, sir. तो जस्ट लेट मी, हाँ, तो ये इधर होगा, यू इधर होगा, तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं। ओके, और इधर कहाँ होगा यू? ये ऐसे होगा कुछ। समझ में आई बात? देखो यू का जो एंगल है वो क्या हो रहा है? लेट अस टेक दिस एंगल एज अल्फा। लेट अस टेक दिस एंगल एज अल्फा। अल्फा मतलब क्या? कोई भी टाइम पे उसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से वेलोसिटी का, वो अल्फा है, ठीक है? समझ में आई बात? अच्छा, यहाँ पे पिंक वाला क्या है बोलो? यू साइन थीटा माइनस जी टी। समझ में आई बात? Yes, sir. तो टाइम के साथ साथ वो कम हो जाएगा। डू यू एग्री? तो मैं यहां पे लिखता हूं, आपको समझ में आएगा। वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो आप, कैसे? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। डू यू एग्री? Yes, sir. Yes. तो वी एक्स तो हमेशा क्या है बोलो? Constant कांस्टेंट है, और क्या है वैल्यू? यू cos theta. cos थीटा इंटू आई कैप प्लस प्लस U sin theta minus GT माइनस जी टी इंटू J cap. J cap. This is the vector, velocity vector. Do you understand? Yes, sir. Okay. Okay, fine. Now, after time of ascent, the projectile is at highest point. Do you agree? Highest point. Do you agree? है क्या नहीं? तो टाइम ऑफ एसेंट क्या है बोलो? यू साइन थीटा बाय जी। लेट अस सब्स्टिट्यूट, देखते हैं वेलोसिटी क्या आएगी। तो वी क्या आएगा? यू कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस बोलो यू साइन थीटा U sin theta Minus minus GT. U sin theta by G into J cap. ओके, तो क्या आएगा बोलो?
सर u cos theta I cap plus 0 हाँ j cap. v बार इक्वल्स टू u cos थीटा i कैप आएगा, बस ये 0 हो जाएगा, वही है क्या सर. नहीं? यस सर. इसका मतलब एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी होगी u cos थीटा, दैट्स ऑल, करेक्ट? मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? u cos थीटा होगा, क्लियर? यस ओके, जी सर. तो इसलिए हमने u cos थीटा लिया था, ठीक है? अच्छा, कोई भी टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर कैसे होगा? ऐसे होगा. वेलोसिटी वेक्टर कैसे होगा? ऐसे होगा, कोई भी टाइम पे. लेट अस कॉल इट v बार. ये कंपोनेंट क्या हो गया? ये वाला, ये u cos थीटा है. डू यू एग्री? और ये कंपोनेंट क्या है? यस ये वाला. u sin theta. न्यू साइन थीटा तो इनिशियल नहीं, एट एनी टाइम बोला मैंने. u sin theta minus dt. u sin थीटा माइनस gt, ठीक है? तो ये हो गया vx और ये हो गया vy. समझ में आई बात? यस सर. ये हो गया vy, क्लियर? और ये जो एंगल है ना, इनिशियल एंगल थीटा था, मगर कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एंगल क्या लेंगे हम लोग? अल्फा लेंगे. क्या लेंगे? एंगल अल्फा. समझ में आई बात? देखो यहाँ पे जो एंगल्स है ना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल्स क्या है? अल्फा है. हाईएस्ट पॉइंट पे अल्फा क्या है? 0 है, दिखाई दिया? और यहाँ पे अल्फा क्या है? यहाँ पे अल्फा नेगेटिव है. क्यों? एंगल इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हियर इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज का पॉजिटिव होगा एंगल, क्लॉकवाइज का क्या होगा? हॉरिजॉन्टल से नेगेटिव होगा. समझ में आई बात? जी सर. यस तो यहाँ पे सारा अल्फा पॉजिटिव है, यहाँ पे सारा अल्फा नेगेटिव है. तो यहाँ पे बोलो कैसे फाइंड करोगे अल्फा इधर? सो विच साइड एंड विच साइड इज नोन हियर फॉर अल्फा? इसको इधर स्लाइड कर सकते हो आप, है कि नहीं? यस तो कौन सा साइड है वो अल्फा के लिए? पिंक वाला. अपोजिट. अपोजिट और ग्रीन वाला एडजेसेंट. एडजेसेंट. तो कौन सा एंगल रिलेट करेंगे? tan theta. tan theta, tan tan अल्फा. tan अल्फा इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड. ऑपोजिट साइड क्या है? u sin theta minus gt. बाय एडजेसेंट साइड क्या है? u cos theta. फॉर्मूला आ गया अपने को. तो व्हाट इज अल्फा इक्वल टू? tan इनवर्स ऑफ क्लियर? Yes sir. ये हो गया अल्फा. ओके फाइन. तो देखो टी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो आपको आ जाएगा. क्लियर? देखो इफ टी इज लेस देन, इफ टी इज लेस देन u sin theta by g, alpha is positive. Alpha is positive. Clear? If t is equal to u sin theta by g, then Alpha is negative. बोलो. Alpha is 0. Alpha is 0. Alpha is 0. Clear? If t is
greater than u sin theta by g, alpha is Negative. नेगेटिव। समझ में आई बात? देखो यहां से लेके यहां तक अल्फा इज व्हाट? पॉजिटिव। दिखाई दे रहा है? क्लियर? एट हाईएस्ट पॉइंट अल्फा इज 0, हियर अल्फा इज नेगेटिव। समझ में आया? क्लियर? जी सर। यहाँ पे कुछ ऐसे होगी वेलोसिटी। क्लियर? तो यहाँ पे एक अल्फा मैं ड्रॉ कर देता हूं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। I think it is okay. So यहाँ पे देखो अल्फा पॉजिटिव है, यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा क्या है यहाँ पे? अल्फा पॉजिटिव है, ठीक है? और यहाँ पे अल्फा नेगेटिव है। क्लियर? ओके? और यहाँ पे अल्फा 0। क्लियर? ओके? आर यू गेटिंग माय जी पॉइंट? ओके, नाउ एक बात यहाँ पे जस्ट थिंक अबाउट वन थिंग। सपोज यू हैव सम प्रोजेक्टाइल लाइक दिस, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कम है कि ज्यादा? कम है। कम है, मतलब 45 डिग्री से तो कम है। दिखाई दे रहा है आपको? यस। यस सर। तो ये जाके स्ट्राइक करेगी ऐसे इधर, ठीक है? ये इधर ऐसे जाके स्ट्राइक करेगी, ठीक है? मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर इसकी u है तो इसका भी मैग्नीट्यूड u ही होगा, ठीक है? नाउ थ्रू आउट जर्नी is it possible that the initial direction will make 90 degrees with direction at any instant? समझ में आया क्वेश्चन? नो सर। Is it possible for the direction of velocity at any instant during its flight to make an angle of 90 degrees with initial direction? Is it possible? देखो यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ तो कभी भी आपका 90 डिग्रीज नहीं हो सकता ना। कौन सा भी टैंजेंट ड्रॉ कर लो, ठीक है? सो डायरेक्शन ऑफ टैंजेंट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। क्लियर? तो कोई भी पॉइंट पे 90 डिग्रीज नहीं कर सकता है। समझ गए? जी सर। देखो सपोज ये 30 डिग्रीज है और ये भी 30 डिग्रीज रहेगा, ये भी 30 डिग्री से स्ट्राइक करेगा। क्लियर? क्यों स्ट्राइक करेगा 30 डिग्री से? देखो व्हाट इज अल्फा? tan इनवर्स ऑफ u sin थीटा माइनस gt बाय, बोलो, यू u cos थीटा। तो स्टार्टिंग एंडिंग टाइम पे टाइम क्या होगा? when projectile hits ground, टाइम क्या होगा बोलो? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin theta by g। 2u sin थीटा बाय जी। now सब्स्टिट्यूट करना फॉर्मूले में, क्या आएगा? अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, बोलो, u sin थीटा माइनस
G into 2u G. sin theta by G divided by u cos theta. बाय यू cos थीटा। तो क्या आएगा? अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ Sir, that is G 2u sin theta by G. यस 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 तो क्या आएगा? माइनस Minus tan theta. sin theta by cos theta which is minus tan theta. Clear? Yes. तो tan इनवर्स ऑफ माइनस tan थीटा आया। ठीक है, तो क्या आएगा? Minus theta. अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ माइनस tan थीटा। माइनस tan थीटा को आप tan ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होगा? Negative. नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? Minus theta. अल्फा इक्वल्स टू माइनस थीटा। समझ में आया? तो इसका मतलब जो एंगल से गया था वही एंगल से आएगा। समझ गए? 30 डिग्री से सपोज, तो ये क्या रहेगा? ये भी 30 डिग्री होगा, माइनस 30 डिग्री होगा। ठीक है, इधर एंगल क्या होगा? 30 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा? एंगल माइनस 30 डिग्री। तो देखो मैक्सिमम दोनों के बीच में एंगल क्या है? 60 डिग्री है क्या नहीं? सॉरी, एंगल क्या है दोनों के बीच में? 60 डिग्री होगा, है क्या नहीं? ये 30 ऊपर है, ये 30 नीचे है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। समझ गए? जी सर। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई एंगल लोगे तो क्या करेगा इससे? एंगल ये कुछ 5 डिग्री करेगा। समझ गए? यहाँ पे क्या करेगा? एंगल 30 डिग्री करेगा। यहाँ पे क्या करेगा? एंगल 40 डिग्री करेगा। यहाँ पे एंगल क्या करेगा? 50 डिग्री करेगा। यहाँ पे क्या करेगा? 60 करेगा। तो मैक्सिमम एंगल दोनों के बीच में क्या है? 60. मैक्सिमम, यहाँ पे लिखता हूँ, मैक्सिमम एंगल बिटवीन velocities during the flight is 60 degrees. Clear? Yes. है क्या नहीं? Okay, fine. So this will never make 90 degrees. 90 degrees करना है तो मिनिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होना जरूरी है। करेक्ट? For angles between initial velocity and a velocity during flight to be, बोलो, 90 degrees, the minimum एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? 45 डिग्री. 45 degrees. Clear? अच्छा, how to find that time? To find the time after which the velocities are perpendicular. The velocities are perpendicular the velocity is perpendicular. The velocity is perpendicular to the initial velocity.
कैसे करें? तो यू इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो, यू बार इक्वल टू, बोलो जल्दी से, U बोलो cos बोलो, यू, theta. वेरी गुड, यू cos थीटा I cap हम्म plus u sin theta minus gt into j नो नो cap. नो नो, यू साइन थीटा जे कैप इनिशियल, दैट्स ऑल, Yes. समझ गए? फाइनल बोल, फाइनल फाइनल वी बार U cos theta. यू cos थीटा I आई cap कैप, minus दैट्स ऑल, हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होगा, वर्टिकल क्या होगा? U जल्दी, sin theta minus U sin gt. theta minus gt j cap. वेरी गुड, ओके, क्लियर? नाउ फॉर दीज टू बी परपेंडिकुलर, टेल मी कंडीशन. जल्दी, कंडीशन इज, बोलो, दो वेक्टर्स कब परपेंडिकुलर होंगे? सर जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 वेरी हो, गुड, वेरी गुड. इज दैट द डॉट प्रोडक्ट इज 0? क्लियर? तो बोलो क्या है? बोलो, u bar dot v bar must be equal to 0. तो बोलो u cos theta I cap plus u sin theta j cap. j cap dot u cos theta I cap plus, बोलो, U sin theta minus gt j cap. है क्या नहीं? must be equal to 0. So tell me what you will get here? U square Cos square theta plus u square sin square theta minus theta minus u sin theta gt. must be equal to 0. तो u square अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? Cos square theta plus sin square theta which is तो equal क्या होगा? to 1. Equals to, agreed? Yes sir. तो ये कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर और u, तो क्या आएगा? t इक्वल्स टू u बाय Sin theta g. Sin. और u बाय g sin थीटा, u बाय g sin थीटा. डू यू अग्री? Yes sir. u बाय g sin थीटा. क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. So after t equals to u by g sin theta, both the velocity vectors will be perpendicular. Clear? Okay. Yes sir. Yes. Now here one thing you see. What is time of flight? बोलो.
U U square sin by 2G to sin sin theta G. by G. Correct? Now this thing is possible. The above thing is possible if t is less than time of flight. Do you agree? देखो ये वाला टाइम अगर टाइम ऑफ फ्लाइट से कम है तभी तो हवा में रहेगा ना, वरना ऑलरेडी ग्राउंड को हिट कर देगा, है क्या नहीं? Yes. So the above thing is possible if t is less than time of flight. Only then the projectile is still in air. सर हम्म आपने लिखा है T is less or equal to T of हाँ Yes, sir. टाइम ऑफ फ्लाइट से अगर ये टाइम कम होगा तभी तो हवा में रहेगा ना, वरना वो तो ग्राउंड को हिट कर देगा और वेलोसिटी खत्म हो जाएगी उसकी। क्लियर? So equal to नहीं ना आएगा। आपने कहा ना ये इक्वल नहीं हो सकते। नहीं, इक्वल स्पेशल केस में होगा, मतलब हिट करते वक्त वो 90 डिग्रीज करेगा, वो 45 डिग्रीज पे आएगा, आपको अभी पता चलेगा। समझ गए? जी सर। You'll understand now. Equal is a special case. ठीक है, ठीक है, इक्वल निकाल दो, इक्वल का बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी समझ में आया? ओके, यस सर। now let us see. So what is t? Substitute t, बोलो क्या है? u by G sin theta। g sin theta must be less than time of flight क्या है? 2u sin theta by G। Agreed? g कैंसिल, तो क्या बच गया? सर u और u भी u कैंसिल भी कैंसिल, तो क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा, बोलो, must be greater than 2। 1/2, है क्या नहीं? करेक्ट यस सर। है क्या नहीं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा must be greater than 1/2, correct? That means sin theta must be greater than 1/√2। √2। अंडर इसका मतलब sin theta must be ग्रेटर देन 45 डिग्री। theta must be greater than 45 डिग्री। समझ में आया? तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, देखो यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, 30 डिग्रीज पे कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। समझ में आई बात? देखो अगर प्रोजेक्टाइल ऐसे होगा तो थीटा इज लेस देन 45 डिग्री। थीटा इज लेस देन, हाँ सर 45 पे नहीं हो सकता। 45 पे वही स्पेशल केस आएगा, मैं बताऊंगा। फाइनल velocity in flight will never be perpendicular to velocity during flight, will never be perpendicular to initial velocity। समझ में आई बात? क्लियर? यस सर। यहाँ पे नेक्स्ट केस देखो, theta equals to 45, theta equals to velocity at the end will be perpendicular to, समझ गए?
ये 45 डिग्री से, ये 45 डिग्री से, ठीक है, क्लियर। ये 45 डिग्री से, तो वेलोसिटी बोलो एट द एंड ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल, समझ गए? will be, sorry, not equal, will be perpendicular to the initial velocity. समझ में आई बात? ओके, है क्या नहीं? क्लियर? Yes, sir. इधर क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट, बेटर स्टेटमेंट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कैन नेवर get perpendicular to its initial velocity. Do you agree? Yes. Okay. What about this case? What about this case? यहाँ पे 45, हाँ. What about this case? अब बोलो. Theta is greater than 45 degrees. यहाँ पे क्या होगा? Velocity during flight at some point of time. Velocity during flight at some point. Will be perpendicular to initial velocity. समझ में आई बात? ओके? Yes. कुछ पॉइंट इधर परपेंडिकुलर हो जाएगी, दिखाई दे रहा है आपको? That this is perpendicular. Are you getting the picture? You are getting this, right? कुछ ऐसे होना चाहिए, है क्या नहीं? Clear? See. You got the point? Okay. Clear? Yes, sir. इधर कहीं भी आप ड्रॉ नहीं कर सकते कि वो परपेंडिकुलर हो जाए. Clear? You cannot draw velocity anywhere such that this is perpendicular to initial velocity. Are you getting this point? Yes, sir.
here it will be something like this, here and here. Okay, I think just make a guess here. It's not exact diagram, but just understand that these two are perpendicular. Clear? Okay, fine. Now, what is average velocity during flight? Can anyone guess? Can anyone guess what is average velocity during flight? Total range by total time. Yeah. Tell me. Can anyone guess? It will be? Range by time of flight. Yeah. Sir, V bar by Very good, very good. It will be u cos theta. Why u cos theta? There are so many derivations. Someone told me range by time of flight. Okay. So what is V average? Total displacement by total time, right? Yes, sir. Total displacement by? Tell me. Total displacement by? Total time. Total time. So what is total displacement, bolo? U cos theta. Range. Range, yes, sir. Range. By? Time of flight. Right. Time of What is flight. range? U cos theta, sir. U sin to theta. Ah, U square sin to theta by ah. 2g. U square sine Sin to to theta theta by? by 2g. No, it is just g. By 2g is for maximum height. Clear? Yes, sir. By? 2u sin theta by 2 by g. By g. That's all. तो क्या हो गया बोलो V average? U square. I can write it as 2 sin theta cos theta. Correct? G will cancel. This G will cancel. By? 2u sin theta. Sin theta. So what will cancel here? U sin theta. So answer is? U U cos cos theta. theta. U cos theta. Clear? Now, there is one more important point to remember. For uniform motion, is this uniform motion? Is this projectile motion uniform motion? Yes, sir. Yes, Yes, because acceleration is constant. That means if acceleration's magnitude and direction is constant, it is uniform motion. So for uniform motion, V average is equal to? Tell me. U plus v by 2. Very good. U plus V by 2. Clear? Everybody knows this? Everybody knows this thing? So whenever something is uniform, uniform means what? Increasing, increases,
with equal amounts. समझ में आया? Yes, sir. Are you getting my point? See, for example, if a class has 100 students, first student gets 1 mark, second student gets 2 marks, third student gets 3 marks, and 100th, student number 100 will get 100 marks. Correct? You are getting my point. What will be the average of the class? 1 plus, 2 plus, 3 plus, and so on up to 100, up to 100. 100 divided by 100. That is the average of the class, na? Do you agree? Yes. Tell me, what is the sum of first and natural numbers? Sum of first and natural numbers. Tell me. 50. 55. नहीं पहले एक्सप्रेशन बोलो. एक्सप्रेशन. हाँ, एक्सप्रेशन बोलो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का. n into n plus 1 by 2, right? Yes, sir. So it is 100 into 100 plus 1 divided by 2 into 100. Do you agree? So it is what, 100 or 1 plus 100 by 2. Do you agree? So what is this? Initial value. This is final value divided by 2. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. So even in progressions, what is the first term? A. What is the second term? A plus D. What is third term? A plus 2D. So, What is the last term? A plus n A plus n minus 1 into. Okay, this is progressions, right? So tell me, what is Sn in progressions? 2a plus By n minus 1 into D by 2. Remember? Anybody remembers this last time? It is actually, if you look at this, it is actually, see, first term plus last term divided by 2. What is first term? A. What is last term? A plus n minus 1 into D. This is the last term. Okay. Remember this formula, Sn Yes. divided by 2. Correct? So anyway, so when things are uniform, if they are uniformly increasing, you can get average by taking initial and final value and dividing it by 2. Do you agree? Yes, So tell me, what is V average? What is initial velocity? Tell me for projectile. U sin theta. Bolo. Initial velocity bolo. Really fast. You must be very fast. U sin theta. cos theta. Do you agree? This is U. What about V? V क्या होगा? V U cos theta I cap plus U sin theta minus GT J cap. नो GT तो टाइम T के लिए होगा. फाइनल जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, देखो इधर से आके इधर जब हिट करेगा, जब इधर तो ये तो इनिशियल है, ये फाइनल है. इनिशियल Plus zero I cap. इनिशियल और ये वो तो हाईएस्ट पॉइंट का बोला आपने. मैं फाइनल पूछ रहा हूँ. देखो इसका U cos थीटा है, इसका भी U cos थीटा होगा, ये U sin थीटा है, इसका क्या होगा? माइनस U sin थीटा होगा. डू यू एग्री? I'll explain. So this is U cos theta I cap. This will be minus U sin theta J cap. You understood why? कि माइनस क्यों हुआ? समझ में आया आपको? yes, sir. क्योंकि जैसे जाएगा वैसे ही वापिस आएगा ना. Clear? If you are not understanding this, then use the formula. Which formula? ये वाला.
ये वाला फॉर्मूला यूज करो, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप v के लिए, ठीक है। तो बोलो क्या है, v इक्वल्स टू, बोलो जल्दी से बोलो, u cos थीटा i प्लस u sin थीटा माइनस टाइम क्या लोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, डू यू एग्री? यस सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, 2 u sin थीटा बाय g इंटू जी j का, करेक्ट? ओके, बोलो अभी v क्या होगा, u cos थीटा इंटू i कैप, बोलो ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, यस यू साइन थीटा। अग्रीड? तो वही है ना वहां पे, तो यहाँ पे क्या कट हो जाएगा, बोलो ये कट हो जाएगा, तो क्या बच गया, वी एवरेज इक्वल टू 2u cos थीटा। 2u cos थीटा, नीचे भी 2 है ना, यस u cos so it is theta into I cap as we got last time, we got here also same answer, clear? देखो Yes. पहले भी वही आया था, टोटल टाइम अभी भी वही आया, ठीक है, different method we got same answer, clear? Okay, ठीक है, so tomorrow we'll continue. Tomorrow I'll take 2 classes, one at 11:30 and one at 2, okay, clear? Okay sir। Yes, sir. Sir, what will be the portion for Monday? Portion is riverboat problems, rain umbrella problems and projectile motion. Projectile motion I will complete tomorrow, okay? Clear? Yes, sir. Okay. I'll just share this now. You just go through properly.